I want to reveal to you the skill of achieving your goals and fulfilling your desires. कॉलेज में हमारा मेन गोल क्या होता था? थोड़ा चिल कर लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं लाइफ को. हमारा मेन डिज़ायर क्या होता था? कोई अच्छे फ्रेंड्स का ग्रुप मिल जाए, कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए तो कॉलेज थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा. इट विल बी मोर फन, इट विल बी मोर, आई विल हैव मोर फॉन्ड मेमोरीज ऑफ कॉलेज. And no matter how much you were able to achieve, you always have fond memories of college because कुछ ना कुछ जो आपने डिजायर किया वो आपने अचीव किया ही किया. 100% हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, doesn't matter. But you had certain desires and these were so strong desires that you were able to find ways to achieve these. I found the secret to achieving goals and fulfilling desires in this book called as Think and Grow Rich by Napoleon Hill. I was very skeptical about reading this book when I landed upon this because I thought this is about getting rich and it will be exploitative in nature. But then the book talked about the meanings of rich. It does not only mean rich in terms of money, it also means rich in thoughts, rich in ideas, rich in knowledge. When I read this, I felt that the book is interesting. I felt the desire to go on, continue reading, and maybe find something worthwhile. The book recommends identifying and then channelizing a burning desire. हम सबके अंदर एक छुपा हुआ बर्निंग डिजायर होता है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है. नॉर्मली हम लोग होप करते हैं चीजों के बारे में, विश करते हैं. आई विश दैट आई गेट टू वर्क इन आरबीआई, आई होप that I'll get selected in RBI this year. But how many of us have this burning, desperate desire to get through, to work in this organization? जितने भी लोग बैंक में काम कर रहे हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, मेजॉरिटी ऑफ देम either have tried to get into RBI or are trying to level up their career by getting into RBI. But अगर मैं उनसे पूछूं आज कि do you have a burning desire to get through into RBI? अगर मैं बोलूं कि रात को 2 बजे तक मेरे साथ डेली पढ़ना है for the next 2 months, how many of you with your hectic job will be able to do it? Not many. बहुत सारे 1-2 दिन 4-5 दिन करेंगे, बट उसके बाद that burning desire will fizzle out. So the problem is channelization of that burning desire, जिससे कि वो जलता रहे, जिससे कि वो कभी कम ना हो. Now, in order to channelize this burning desire, you need to bridge the gap between conscious and subconscious. और ये खाली ऐसे aspirants के लिए नहीं है जो काम कर रहे हैं. Whoever is preparing for RBI needs to have this burning desire. I'll tell you how it is done and then channelize it by bridging the gap between conscious and subconscious. Conscious वो thought होता है जो हम सोच के बताते हैं, but subconscious ऐसा thought होता है जो हमारे normally control में नहीं होता है. The moment you are able to connect these two, automatically you will find your success coming to you automatically. How do we do it? अब मैं let's say student से पूछूं कि आज कितना पढ़ा और पिछले 2-3 महीने से कितना पढ़ रहे हो, आप सब लोग बता पाओगे बिकॉज योर कॉन्शियस विल प्ले अ रोल देयर कि मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है. मैं पिछले 90 डेज से 6 घंटे एवरी डे, आई एम 6 आवर्स एवरी डे आई एम एबल टू गिव आउट, मतलब 540 घंटे में पढ़ चुका हूँ. बट व्हाट इफ आई आस्क यू एंड आई वांट एन इमीडिएट आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू विल गेट थ्रू आरबीआई दिस ईयर? मेजॉरिटी ऑफ अस विल हैव अ डाउट. हो सकता है हो जाए, आई एम गिविंग माई 100%, बट आई डोंट नो. Let's see what the exam is like. If the exam is too difficult, I might not get through. Let's see what the competition is like. Competition बहुत difficult हुआ तो शायद नहीं होगा. देखते हैं क्या होगा. You have a doubt. You have a fear of selection. And this is your subconscious. Now the trick lies in connecting your conscious and subconscious in such a way that your subconscious says, I will get through the examination this year. ये आपके ultimately दिमाग में बस गई है चीज. You started believing it so much that you ultimately get it also. How do we do it? The solution that is given by Napoleon Hill in this book is called a self-suggestion. बहुत simple सी technique है. How does it work? It says that there is a dominating thought in our conscious mind. That dominating thought can be of fear, that can be of doubt, or it can also be of self-confidence. What you have to do is to convert the dominating thought from fear or doubt to self-confidence. उसको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है फ्रॉम नेगेटिविटी टूवर्ड्स पॉजिटिविटी. व्हेन यू आर अल्टीमेटली एबल टू अचीव दैट, आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से, अपने गोल अचीव करने से. अगर हम फिर से एग्जाम्पल उठाएं कॉलेज वाला,
हमारा कॉलेज में चिल करने का, रिलैक्स करने का, एंजॉय करने का, एक्सपीरियंस करने का जो डिजायर था, इट यूज टू बी सो स्ट्रॉन्ग एंड सो पॉजिटिव कि अगर हमारे टीचर्स हमें बंक करने के लिए पनिशमेंट भी देते थे, सस्पेंड भी करते थे, पेरेंट्स को भी बता देते थे, नथिंग कुड स्टॉप अस। हमें कुछ रोक ही नहीं पाता था, हम बस जो हमें करने का मन करता था हम करते जाते थे। वी वर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, we did not have a doubt that we were doing anything wrong. Even if we knew that we were doing something wrong, our subconscious did not believe it. Our subconscious felt and believed कि हम जो कर रहे हैं वो दोबारा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए करना जरूरी है। That is what we need to do. How do we do it? Every day give yourself a dose of positivity. आज नेगेटिविटी का एक एग्जाम्पल ले तो मैं 3 घंटे ही पढ़ पाया या बिल्कुल नहीं पढ़ पाया। ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा काम था, क्लोजिंग चल रही थी। I came back home and I first person tells himself कि यार आज कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाई, अब इस बार एग्जाम क्लियर नहीं होगा शायद। सेकेंड पर्सन comes in and says आज पढ़ाई नहीं हो पाई, 6 घंटे पीछे चला गया, कल को 6 की जगह 8 घंटे पढ़ूंगा। In the next 3 days I'll cover it up to make sure that I clear the examination this year. This is called as a positive self-confidence fulfilled dominating thought. When you have this, automatically this becomes a part of your reality. This becomes a part of your second nature. और अपने आप ही धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी से आप अपने रिजल्ट्स को अपने डायरेक्शन में ले जा पाते हो। This is what a dominating thought of positivity and self-confidence can do to you. So do this every day. Tell yourself, if you're doing well, pat yourself on the back and tell yourself, I'm doing well, I'm going to clear the examination this year. If you do badly, tell yourself, it doesn't matter. Identify the reason that you've not done well, convert it into something positive, and then you will see your name in the list this year. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक्स लिखते हैं, एग्जाम पास आ रहा है तो मॉक्स लिखना शुरू करते हैं और मॉक्स में अच्छा स्कोर नहीं आता है, या फिर स्टैग्नेंसी आ जाती है, या फिर स्कोर नीचे जाना शुरू हो जाता है। व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ? यू टेल योरसेल्फ द स्कोर्स आर नॉट इन लाइन विद व्हाट आई बिलीव इन एंड व्हाट आई वांट टू हैपन। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि स्कोर नीचे क्यों जा रहा है या फिर स्कोर अच्छा क्यों नहीं है, और फिर आई विल make sure that I convert the scores in such a way that I clear the examination this year. मैं अपना स्कोर बेटर करूंगा, इन स्टेप्स के थ्रू करूंगा जिससे कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। यू कम बैक टू दिस, टू द सेम मॉक और टू अनदर मॉक आफ्टर 1 week एंड सी योर प्रोग्रेस। अगर अपने आप को डेली ये डोज रिटन फॉर्म में देने लगोगे, then nobody can stop you from clearing the exam, or nobody can stop you from achieving your goals. These can be your goals of life or can be shorter goals like clearing the RBI examination as well. Whatever it is, if you give yourself this dose of self-suggestion and bridge the gap between conscious and subconscious, you will be successful. You will be able to achieve your goals. I hope this small idea that I found in this book will help you achieve better things in 2024 and will help you find your success in this year itself. I'll see you very soon again with some other videos of the same nature where I want to talk about what I read. Till then, all the best. Take care. Bye-bye. Jai Hind.